अच्छा, इस पेपर में हम मेरे ख्याल से पेज 21 पे थे। Yes, sir. We finished 21. अच्छा ठीक है, दिस वन। तो वी गोना स्टार्ट हेयर के वो कह रहे कि दिस वन वी डिड दिस राइट, Yes, sir. एंड वी आर ऑन पेज 22। ठीक है, दिस वन। तो इसमें कि प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ पीक्स दैट वुड बी सीन इन द कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रम ऑफ दिस थिंग। कार्बन 13 में हाउ मेनी पीक्स वुड यू सी फॉर दिस मॉलिक्यूल? क्या होगा, कितनी पीक्स होंगी? कि एक तो ये, दिस कार्बन इज यूनिक, ये वाला। ठीक है, दिस कार्बन 13 है ना? ठीक है, सो दैट वन, दैट्स वन। और क्या होगा? अच्छा, ऑल द कार्बन एटम्स इन बेंजीन दे आर नॉट इक्विवेलेंट, सो सो दे ऑल डिफरेंट। इन्वायरमेंट उन सारों की डिफरेंट है ना? सो दैट्स, इनमें से कोई सेम तो नहीं है? ये क्लियर है? Yes, sir. All different. ठीक है, सो दे आर ऑल डिफरेंट। और फिर वो जो नेक्स्ट है, दैट्स दिस कार्बन, सो दैट्स डिफरेंट एज वेल। ठीक है, देन यू हैव दिस, अच्छा ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट। अच्छा, दिस कितने हो गए? दैट्स 7, दिस इज 8, दिस इज 9। हाँ, फिर वो जो एंड वाले हैं ना, देर ऑल एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, these carbons have exactly the same environment, so that's number 10। ठीक है, तो ये सही है। So that's going to be how many peaks? 10 peaks। क्लियर है ये? Sorry, can you Yes, sir. explain this? I don't understand. नहीं, कार्बन की environment है ना, कार्बन की environment if it's exactly the same, तो वो NMR spectrum it's going to resonate at the same frequency। ठीक है, तो अगर आप इसको देखो ना कि if you look at this one, ये जो Cl वाला कार्बन है, this one, मुझे बताओ कि इससे सिमिलर कोई, is there any carbon that's similar to this, like bonding wise? जो No. Cl, तो वो that's one। ठीक है, फिर ये वाला जो कार्बन है, environmentally it's different from all the others, क्योंकि ये कार्बन जो है Cl वाले के करीब है, ठीक है, इसके साथ है। बट दिस कार्बन इज, मतलब बेंजीन में ऑल दीज कार्बन अनसिमेट्रिक है ना बेंजीन। अगर वो सिमेट्रिक होता ना, इफ इट हैड बीन लाइक दिस, कि इफ इट हैड बीन लाइक दिस और यहाँ पे Cl होता, तो फिर ये होता कि सम ऑफ दीज कार्बन वर एग्जैक्टली आइडेंटिकल। कि एक कार्बन होता, ठीक है, दैट वुड रेजोनेट, एंड देन यू हैड अनदर कार्बन, ये दोनों कार्बन दे वुड बी एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, टू और टू आर एग्जैक्टली द सेम। देन यू हैव ये जो थर्ड कार्बन है फ्रॉम बोथ साइड्स, दैट्स एग्जैक्टली द सेम। और फिर यू हैव अ फोर्थ कार्बन, ठीक है, विच इज डिफरेंट। तो हो ये रहा है कि अगर तो एनवायरनमेंट एग्जैक्टली सेम है, तो इट्स गोइंग टू रेजोनेट एट द सेम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे बेंजीन के अंदर ऑल द कार्बन्स आर ऑल डिफरेंट। 3 और 4 में डिफरेंस है ना, क्योंकि 4 जो है दैट्स फर्दर अवे फ्रॉम Cl, 3 इज स्लाइटली क्लोजर टू Cl। ठीक है, ये आइडिया क्लियर है? Yes, sir. और फिर ये OH वाला कार्बन, दैट्स यूनिक। उसके बाद दिस कार्बन ओवर हियर, दैट इज आल्सो मतलब यूनिक। तो और ये ब्लू वाले कार्बन है, दे आर एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, तो क्लियर है बात? Yes, sir. अगला पार्ट है द प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज ऑलरेडी D2O शोस पीक्स इन 4 डिफरेंट। अच्छा, D2O के अंदर कौन सी पीक गायब हो जाती है? डी डी डज नॉट रेजोनेट, तो डी के अंदर विच पीक डिसअपियर्स? OH1, sir. And the NH1. हाँ, तो OH और NH2 की जो पीक्स है ना, दे डिसअपियर, क्योंकि अगर D2O हेवी वाटर होगा ना, तो दे वुड इवेंचुअली टर्न इनटू, द H इज गोइंग टू गेट रिप्लेस्ड। तो उससे क्या है कि द प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ दिस प्रोटॉन एनएमआर, अच्छा एक तो मुझे इसको ना रब करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दिस वाज कार्बन, कार्बन स्पेक्ट्रम। ठीक है, नाउ HNMR। अच्छा, HNMR में अब फिगर आउट करो कि हाउ मेनी डिफरेंट एनवायरनमेंट्स डू यू हैव। ठीक है,
अच्छा, HNMR में होगा कि देयर आर 4 H's ओवर हियर ऑन बेंजीन। अच्छा, बेंजीन वाले जो H प्रोटॉन है दे काइंड ऑफ द सेम एनवायरनमेंट, ठीक है। तो दीज वंस दे आर काइंड ऑफ, अच्छा दीज वंस आर काइंड ऑफ सिमिलर, ठीक है। तो दीज आर काइंड ऑफ सिमिलर। फिर देयर इज एन OH H, तो ये OH के साथ H है वो थोड़ा इट्स डिफरेंट, ठीक है। अच्छा, देन द नेबरिंग दैट्स गोइंग टू बी 2 H's। अच्छा, फिर यहाँ पे ना देयर वुड बी थ्री, मतलब each one of them is a CH3, ठीक है। So there's going to be a CH3 and there's going to be another CH3, ठीक है। और यहाँ पे भी ना there is CH3, so all of them are exactly, ये जो साइड वाले हैं they're all exactly the same। ये जो 3 CH3 हैं they're exactly the same। अच्छा, फिर आपके पास you have ये वाला H है और CH2 है। अच्छा, ये 4 एनवायरमेंट्स हो गए, ठीक है। आई एम ओमिटिंग वो वाले, आई एम ओमिटिंग OH एंड आई एम ओमिटिंग NH, क्योंकि उसके अंदर ऑब्वियसली दे नॉट गोइंग टू रेजोनेट, ठीक है। if it's T2O, तो they're not going to resonate। तो वो कह रहे the peaks for the environment is a doublet। तो वो कह रहे जो CH2 वाली peak है ना that's a doublet। मतलब why is this a doublet? वो क्या रूल होता था? ये जो येलो वाला है CH2, why is that a doublet? So because the neighboring C atom has one H, so n+1 rule becomes doublet. ठीक है, तो उसके साथ एक H है ग्रीन वाला, ठीक है, so that's why it's a doublet। अच्छा, give details for each of the 3 peaks in the proton NMR spectrum of chemical shift। तो ये तो बेंजीन वाला केमिकल शिफ्ट ना, so you just have to open up the data booklet, maybe it's, ये पुराना पेपर है नहीं प्रिंटेड है। अच्छा, सो बेंजीन वाला H का है अल्काइल नेक्स्ट टू, नहीं विज बेंजीन H, हाँ ये वाला अटैच टू एरोमेटिक रिंग, तो इट विल रेजोनेट एट 6 to 9, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन लिखनी शुरू कर देनी है कि जो पिंक वाले ना दैट्स केमिकल शिफ्ट 6 to, अच्छा दैट्स केमिकल शिफ्ट 6 to 9। फिर और क्या, इन्वायरमेंट ऑफ द प्रोटॉन, सो इन्वायरमेंट वही है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, राइट ओवर देयर। I mean, you're just going to say it's it is H that is attached to aromatic ring, ठीक है, that's what your environment is। फिर क्या है, splitting pattern और number of H atoms is possible, that's 4 H atoms, ठीक है। इसका splitting pattern कोई नहीं होगा वैसे। फिर अगले वाले का मुझे था, ये ग्रीन वाला H is that, अच्छा ये कौन सा H है, the green H, CH next to O, next to OH, तो उसको देखो तो there is one over here कि C के साथ H and it's next to O, so that's going to be 3.224। Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. तो environment क्या होगी, alkyl next to electronegative atom, ठीक है। तो that's this one, ये green वाला क्या था 3.22, and that's alkyl next to an O। अच्छा, फिर ये मेरे ख्याल से alkyl टाइप होगी क्योंकि it's attached to a carbon chain, so that's 0.9 to 1.3, ये जो end वाले blue वाले हैं। क्योंकि if you have a look at the, तो alkane environment is alkane type क्योंकि they're obviously attached to a carbon chain, ठीक है, and it's not going to split। This one is not going to have no splitting because the neighboring carbon does not have each atom, ठीक है। ये क्लियर है बात? Yes, sir. ठीक है, तो neighboring carbon does not have each। अच्छा, अब ये कि और इसका देख भी लेते हैं कि CH2 वाला उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी टोल्ड यू दैट, ठीक है। रिमेनिंग 3 का, ठीक है, द 3 पीस अपार्ट फ्रॉम दैट,
उसको देख लेते हैं, is there any extra information that is missing? अच्छा, chemical shift 629 4H multiple aroma वो exactly same है. 9H is 0.9 to 1.7 alkane type. That's it. और वो एक alkyl next to electronegative. हाँ, sorry, we didn't mention कि it's at 3.2 to 4. We didn't mention कि it was a triplet. ठीक है. So this one is a triplet. Why is this a triplet? Because the neighboring carbon has two H's. Is this clear? The green वाला नहीं है. 3.2 to 4. That's right next to that's two H's. So that is why it's a triplet. ये clear है? Yes, sir. अच्छा, उससे अगला जो part है, that's अच्छा, this is about I think TLC, thin layer chromatography. ठीक है. Thin layer chromatography is कि you have a metal plate and you have a gel that's aluminum oxide or silica gel. ठीक है. So say a mixture containing four different metal cations suggests a compound that could be used as a stationary phase for this experiment. What could be used as a stationary phase? मतलब वो क्या अभी मैंने बताया कि it's going to be I mean, you can use a silica gel. Is that clear? कि सिलिका जेल Yes. इसमें यूज कर सकते हैं. अच्छा, और वो दूसरा क्या था, Al2O3. अच्छा, then you have के table shows RF values for different metals. So the RF values are given. Suggest the identity of the cation that caused the spot. So basically you have to calculate the RF value. Spot कौन सा है? M. With how much distance did M travel? M की RF QCM, value कैसा? ठीक है, RF value क्या होगी? Distance traveled by M divided by the distance that is traveled by the solvent, which is 5. ठीक है, तो 205 कितना हो गया? 0.4, right? तो it's going to be the first one. ठीक है. तो the explanation में you just have to write कि it's going to be the first one and 2 out of 5. ठीक है, clear है? yes, sir. Yes, sir. As a student repeats the experiment using butane 1-ol as the solvent. पहले क्या था solvent? Did he mention anywhere what the solvent is? Water, sir. कहाँ लिखा है? Above the diagram. हाँ, water as a solvent. ठीक है. So they're using water as a solvent. Now they're using, अब ऐसा water और butane 1-ol. What would be the difference? किसमें ज्यादा hydrogen bonding होती है? Water, sir. अच्छा, this is more polar and this one is less polar. So why is butane 1-ol less polar? क्यों? OH There's तो उसमें only भी है. one OH bond, whereas the other one has two. हाँ, प्लस वो भी है ना कि it's got a, अच्छा वो भी है कि it's got an alkyl chain. तो alkyl chain is non-polar. ठीक है. तो उस मॉलिक्यूल का जो परसेंटेज है ना, that is polar actually is lesser. ठीक है, compared to water. Water तो पूरा का पूरा polar है. अच्छा, suggest why the metal cations do not move as far by the TLC plate with, बस यही था ना. Okay, butane 1-ol में why they're not moving? क्योंकि it's less polar. Less polar है तो the ions are polar. I mean, they've got charges, so they're not going to get attracted as much to a slightly less polar thing. ठीक है? Clear है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, next part. The students place the TLC plate in figure 6.1 with the plate को कह रहा है KSCM. The color of some of the spots changes as some of the metal cations undergo a ligand exchange reaction. Identify the ligands involved in the ligand exchange reaction. तो पहले क्या था? aqueous था ना, तो aqueous में कौन सा ligand होता है? Water, sir. Water होता है. ठीक है. So the पहले तो originally you've got water as a ligand, and then when you add KSCN, तो
what ligand would be in KSCN? क्या होगा KSCN में ligand कौन सा होगा? Is it CN, sir? Or SCN? हाँ, क्योंकि K is +1, right? So there's definitely SCN -1, right? So that's going to be your ligand. Because obviously there's going to be some lone pairs on N and they're going to get attracted to the positive metal cation, ठीक है? Clear है बात? Yes, sir. अच्छा, अब उसके बाद ये कि in a third experiment, the pH of the mixture of metal ions is kept constant using a buffer solution. Student prepares the buffer solution by mixing 20 cm cube of this and 50 cm cube of this. मतलब वो ये कैसा बफर है? अच्छा, वो कह रहे हैं कि दिस इज ठीक है. पहला तो रिएक्शन, राइट? रिमेंबर उसने ये दिया हुआ है. अब बता कि if you reacted with KOH, can you explain to me कि what will happen? मतलब अगर मैं इसको KOH के साथ रिएक्ट करूं, which part is going to react with KOH, which is an alkali? Sir, is it the C8H5O4 part? नहीं, इस मॉलिक्यूल में कौन सा पार्ट है? Oh, कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट है ना. Hmm. तो क्या होगा? वो जो H होगा, that's going to get knocked out and you'll have a salt and the H will react with it and form water, right? That's going to be your product. So your product is going to be C8 H4 हो जाएगा क्योंकि lost an H and you're going to have O4 -1, नहीं -2 हो जाएगा. मतलब पहले -1 था, now there are 2 minus charges, ठीक है? And they're going to be 2 K +1 ions, मतलब K2. Is this clear कि एक K तो पहले ही लगा हुआ था ना, but the other one would also react, ठीक है? Is this clear? Yes, sir. खदीजा क्लियर है? प्लस H2 होगा, ठीक है? Sir, I don't get this. नहीं, वो है ना, ये देखो कि ये क्या है इस, आई मीन दिस पार्ट, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना. Yes, sir. तो मुझे ये बताओ कि एल्की को अगर रिएक्ट करोगे तो ये तो रिएक्ट हो चुका है. सो वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो रह गया ना, उससे वीक है ना, इट्स अ वीक कार्बोक्सिलिक एसिड because there's still one carboxylic acid left. वो जाके रिएक्ट करेगा ना, it will form a salt and it will form water, ठीक है? तो ये आपके प्रोडक्ट्स होंगे ना. तो उससे कहा था इक्वेशन लिखो ना. तो इक्वेशन में क्या हुआ है कि पहले there was 1K, now there are actually 2Ks, ठीक है? ये क्लियर है? Yes, sir. और पहले वो -1 था, अब वो -2 हो गया क्योंकि there's another negative charge, ठीक है? तो अब वो -2 हो गया और प्लस उसका एज किधर गया, उसने वाटर बना लिया, ठीक है? सो दैट्स योर इक्वेशन. अब मुझे तो मोल्स बताओ, बफर किसके बीच में बनता है? बफर इज वीक एसिड प्लस क्या होता है साथ, बीच में क्या मिक्स करते हैं? But you always form a buffer when you have a weak acid plus you have a conjugate base. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे बताओ इसके मोल्स, KOH के मोल्स कितने हैं? 22.15 divided by 1000. How many moles you got? Sir, 3 times 10 power -3. अच्छा, KOH के मोल्स हैं 3 times. दूसरे के मोल्स कितने हैं? 15.1 divided by 1000. That's 5 times 10 power -3, right? ये है ना? Yes, sir. Yes, sir. बताओ एक्सेस में कौन सा? The 5 one, sir. ठीक है, this will completely react, right? And out of 5 you'll be left with 2 times 10 power -3. ये भी clear है? Yes, sir. Yes, sir.
क्योंकि 3 will only react with 3, so you're left with 2. अच्छा, 3 will react with 3 and दूसरी साइड पे they're going to produce 3. सही है, क्लियर है? Yes, sir. तो अब आपको ये पता लग गया है कि एसिड के मोल्स और एंड द कॉन्जुगेट बेस मोल्स, यू नो बोथ ऑफ देम, ठीक है? यानी इसका मतलब है कि what it means is कि आपके पास weak acid है, which is this one, मैं K को हटा रहा हूँ, K is suspected है, वो अपना एक और H+1 लूज करता है। अच्छा, C8 है, सॉरी। और O2 माइनस बना, O4 -2 बना लेता है, so he loses another H plus H+1. अच्छा, now you know the moles. Okay, this is 3 times 10 power minus 3, और वो वाला जो उधर है ना, that's 2 times 10 power minus 3. तो क्या फॉर्मूला होता है बफर का? Is it DKA, sir? हाँ, K का क्या फॉर्मूला होता है? It's products of reactions, right? Yes, sir. So it's going to be 3 into H+1 divided by 2, right? But 10 power minus 3, 10 power minus 3 would get cancelled out. And you're given the value of K, which is 5.4. PK is given. How do you find K? That's K would be 10 power minus 5.4, right? Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको सॉल्व करो और pH निकालो एंड में। Sir, it's 5.58. 5.58? Yeah. ठीक है, देख लेते हैं। 5 पॉइंट, ठीक है, 5.58, ठीक है, that's your answer. अच्छा, लेकिन ये फिर क्लियर कर लो कि जस्ट रिमेंबर कि कभी कभार व्हाट दे विल डू इज दे विल ऐड एन एल्कली, ठीक है, लेकिन वो एल्कली जो होगी इट विल इवेंचुअली गेट यूज्ड अप। तो एंड में ना वीक एसिड हमें बफर बनता है हमेशा वीक एसिड प्लस इट्स कॉन्जुगेट बेस, तो वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस वो हमें एंड में ना आफ्टर द रिएक्शन दैट इज द ओनली थिंग दैट्स लेफ्ट, ठीक है? तो वो बाय डिफॉल्ट इट हैज फॉर्म्ड अ बफर, और फिर वो बफर का फॉर्मूला यू हैव टू यूज, ठीक है? क्लियर है बात? Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक है, ये वाला पेपर Sir, खत्म हो गया। हाँ जी, sir, can you go to question 2 of this question of this paper? क्वेश्चन नंबर 2 is ये कौन सा पार्ट? Uh, 2B, 2B part 1. अच्छा, 2B पार्ट कौन सा? 2B part 1. हम्म, वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है ना? Here, sir, when they give the concentration of H2PO2 minus, is that a decrease or an increase? Decrease ना, because otherwise it would have been for E naught it's going to be standard, right? Standard क्या होता है? 1 मोल per Is it dm cube. 1? हाँ, Oh, ठीक है, क्लियर है? okay. Yes.
अच्छा ये वाला हो गया। बाकी फिर हम कर लेते हैं एक और स्टार्ट के। वी कैन स्टार्ट विद, अच्छा हमने कौन सा कर लिया? वी आर डन विद दिस वन, सो वी कैन स्टार्ट विद मे बी समर के। हमने कर लिए सारे? No, That's sir. pretty. We did the October, November ones, but not the May, June one. अच्छा फिर 4-3 कर लेते हैं। चलो पहला वाला। Thermal stability of group 2 nitrates changes with increasing proton number. Explain your group 2 nitrates. Why do they become more stable down the group? So the ionic radii get increase, so the charge density decreases, less polarizing power, and the ion gets more stable. ठीक है, तो your एक हो गया ionic radii increases। अच्छा उससे क्या होगा कि charge density decreases, less polarization of the anion, ठीक है, which is कौन सा ion है? Nitrate है, ठीक है। So there's going to be less polarization। और फिर उसके बाद वो ये कि hence it will be more stable, ठीक है। तो thermal stability increases, that's it। इक्वेशन तो लिख लोगे कॉपर नाइट्रेट की, ठीक है। क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड NO2 NO2। उसका आ गया क्वेश्चन। कॉपर, वो कह रहा है कि फर्स्ट थिंग ABCD, ए का क्या फॉर्मूला है? कॉपर आयंस विद वाटर, व्हाट्स द फॉर्मूला? So CuH2O6 charge plus 2. ठीक है, और कलर क्या है उसका? अच्छा दिस वन इज Cu। अच्छा H2O6 एंड द चार्ज इज +2। और कलर क्या है इसका? ठीक है, सो द कलर इज, ठीक है, इट्स गोना बी ब्लू कलर्ड। बी क्या है? CuOH2 H, yeah, OH2 H2O4 charge 0. ठीक है, when you add a little NH3, so that NH3 basically acts as a base, and it instead produces OH ions, ठीक है। वो मतलब NH4+1 plus OH minus ions, ठीक है। So you get a hydroxide precipitate। तो खाली कॉपर हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हो, that's a pale blue solid। उसके बाद C क्या होगा? CuNH3 6 charge plus 2. चार्ज के +2। अच्छा that's deep blue, right? Yes, sir. और finally D क्या है? CuCl4 charge -2. इसका what's the color? Greenish yellow solution. ठीक है, so that one is greenish yellow, ठीक है। अब फिर explain what is meant by the term polydentate ligand? Ligand that will form
many adhesive bonds with a metal cation. ठीक है, has many lone pairs and is capable of forming many dative bonds with a central metal cation. अच्छा, तो एटा आ गया और उसके वो कह रहे calcium ions in this and in this have a coordination number of 6. What is the meaning of the term coordination number? The coordinate bonds, number of coordinate bonds. ठीक है, so that's the total number of coordinate bonds that are formed. Or an aqueous solution containing this is added, aqueous solution, ठीक है, to a solution containing equal concentrations of chromium and iron and lead. The resulting mixture is left to reach a state of equilibrium. State the type of reaction when this thing and this thing. क्या reaction? What is the type of reaction? Is it ligand exchange, sir? नहीं, क्योंकि I don't think you can call it ligand exchange, क्योंकि ligand तो change नहीं हुआ ना, वो अभी भी at है. I think you can, क्या कहोगे इसे? Simple exchange है. इसका देख लेते हैं. Can it be displacement? Displacement would be a better word. Substitution is another word. तो ligand तो वही का वही है, बस जो भी है. अच्छा, so नहीं, they're still calling it ligand exchange. नहीं, हाँ ligand exchange है ना. हाँ, मतलब obviously ligand exchange है. मतलब वो आयन का चेंज होना या ligand का चेंज होना, it's the same thing, right? Oh, मतलब क्लियर है ना. yes, sir. मतलब वो the ligand was with calcium, now the ligand is with chromium, so it is the main, it's the same thing, ठीक है. तो reduce the relative concentration of, अच्छा, इनमें से कौन सा आयन सबसे ज्यादा बनेगा? Fe, sir. अच्छा, हाँ, ठीक है. The Fe eta complex would be the most because और उसकी reason क्या होगी? It's got the highest K stability value, which means equilibrium favors the products, ठीक है. और least concentration इन सारों में से किसकी होगी? Excluding calcium, so that will be lead, right? ठीक है, clear है? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो, ये वाला क्वेश्चन है, ये एक काम करो, इसका जो बाकी पार्ट है ना, वो भी होमवर्क है, ठीक है, बल्कि इसका अगला भी भेज दो, क्वेश्चन 2 भी. अगला क्वेश्चन 2 है, हाँ. तो बस कंप्लीट 1 एंड सेंड क्वेश्चन 2 एज वेल. ठीक है, क्लियर, ये मुझे भेजो. Okay, sir. Okay, sir. चले, ओके देन, टेक केयर, Love. लव. Yes, sir. Hafiz.